So students, we are now on the examples, which actually the past papers examples for as far as letter writing is concerned. So students, in 2019 ग्रेड 9th पेपर ऑफ पेपर 1, क्योंकि दो पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग टाइप पे एक इवनिंग टाइप पे, तो हमने दोनों पेपर्स को स्टडी किया. And in the first paper there were two letters that write a letter to your father to send you money for hostel dues. Second is to your friend thanking him for the books he lent you. स्टूडेंट, बोथ ऑफ दीज लेटर्स, सबसे पहले तो इन लेटर्स को स्टडी करें तो ये लेटर्स आपकी इनफॉर्मल लेटर्स हैं, क्योंकि इनके रिसिपिएंट्स आपकी फैमिली मेंबर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं. सो मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ लेटर पढ़ाई थी तो आपको मैंने ये क्लियरली बताया था कि जब आपका रिसिपिएंट आपका फैमिली मेंबर या आपका कोई फ्रेंड हो, दैट इज इनफॉर्मल लेटर. तो आपने इनफॉर्मल लेटर के पैटर्न को फॉलो करना है जो 5 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं. तो उसके जरिए अब लेट्स डिस्कस द फर्स्ट लेटर, दैट राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड यू सम मनी फॉर हॉस्टल ड्यूज. हाउ यू गोना स्टार्ट योर बॉडी? यू हैव टू tell your father about your health, or to ask about your father's health or the family health. Now you can go with the study performance that I'm studying very well. You don't have to worry about my studies. After that, you're gonna make request to your father that he should send some money that you can pay your hostel dues. अब ये तो आ गई आपकी बॉडी में आपने ये बात कन्वे करनी है, आपने ये बात अपने फादर को समझानी है कि वो आपको पैसे भेजें ताकि आप अपने हॉस्टल के ड्यूज दे सकें. इन नेक्स्ट लेटर, जिसमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक्स ही लेंट यू. इस लेटर में आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बुक्स दी हैं और आप उसको लेटर लिख रहे हैं, या उसने आपको कुछ बुक्स भेजी हैं और आपने उसको बजरिया खत आप उसको थैंक्स करना चाहते हैं, तो आपने ये लेटर लिखना है. सो 2019 के इवनिंग टाइम के पेपर में जो दो एक्स्ट्रा लेटर आए थे, या दो जो उस पेपर में जो लेटर आए थे वो कुछ यूं थे. द फर्स्ट वन इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर एग्जाम सक्सेस, एंड द सेकंड वन इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर कंडोलेंस ऑन द डेथ ऑफ हर मदर. Both of these letters related to the informal letter because इन दोनों के recipient भी आपके peer group है या आपके family members हैं. 2018 के letters में write a letter to your brother to discuss the progress of studies. आपने अपनी studies की progress बतानी है अपने भाई को. And the second one was write a letter to your mother just to discuss about importance of choosing science subject. So students, all of these letters are in your second book, that is related to comprehension and composition book. So ये चंद एक letters हैं, approximately 8 to 10 letters. अगर आपने इन letters की body को we can say prepare कर लिया, so you are not gonna we can say feel any trouble while writing this or while attempting this question of letter writing. So student, I hope you understand this concept of letter writing. आपको ये concept thoroughly समझ आ चुका होगा. I hope so कि आप there is no ambiguity in letter writing. आप letters को easily distinction भी दे सकते हैं कि कौन सा letter जो है वो formal letter है और कौन सा letter informal letter है. This is Sadar Hamza, your English instructor from tutoria.pk. I hope you understand each and everything about letter writing. Let's move to the next topic.